sexual abuse and rape case against former MP Prajwal Revanna, a special court in Bengaluru earlier today declared him a convict. He was held guilty. The Special Court for People's Representatives in Bengaluru had completed the trial in the rape case on 18th of July and had reserved its verdict. The case pertains to a 48-year-old woman who was working as a domestic help at the family's Gannikada farmhouse in Hassan district's Hole Narsingapura. She was allegedly raped twice in 2021, and the act recorded by the accused on his mobile phone. Neha is joining us on the broadcast with more details. It's a massive breakthrough in the case. Prajwal Revanna has been held guilty. Well, that's right. In fact, it's a massive setback over here for the former JDS MP there, Prajwal Revanna, even as you have the special court in Bengaluru now that's convicted him of this crime of rape. Remember, of course, we've spoken with the special public prosecutors on this case as well, and they term it to be a big victory for them, stating that, this is, of course, something that's now laudable. The efforts by the court as well over here to ensure a speedy trial into the case is something that would likely set an example now for many others. Remember, as far as this particular case here is concerned, this was indeed a house help there of, the former MP who'd come out, who'd, braved, of course, all of the odds there and stated that she was indeed raped by the former MP. Digital evidence is something that played a very, very key role in this case, is what the public prosecutors too have gone on to say. And even as trouble continues to mount here for the MP now, the quantum of the punishment is something that would only be announced tomorrow by the court. Remember, when we, of course, spoke with the advocates and the special public prosecutors as well there, they went on to suggest that they would likely argue for life imprisonment, given the kind of charges now against the former MP here. Of course, politics that's already now erupted over this entire matter. We're seeing Congress leaders coming out here, slamming and raising questions as to why now the BJP has remained mum over this entire issue. But most importantly, quite a crucial verdict over here that's come in now from this court here, and we'll really have to wait and see as to the manner in which, of course, the politics around this also now continues to develop. Absolutely, Neha. Thank you very much for getting us the details. Let's also take a look at the assurance that was given by Prime Minister Narendra Modi. It's endgame for Prajwal Revanna. This is the 2024 message of Prime Minister Narendra Modi. He gave a guarantee and assurance to India's betis to always protect them. This is the zero tolerance message that the Prime Minister gave. प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तब का है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवेगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तब का है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा, और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वो कलेगा, उसके बाद उसको बाहर लाना, और उसको विदेश बाहर
भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल कि भाई आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो। अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते। आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ये उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होनी चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। So that was a zero tolerance message by Prime Minister Narendra Modi. Quick break with that. There's a lot more lined up on the other side as well. When